Been a victim of police verification. When I went for a passport in 2012, एक तो होता है आप अप्लाई करते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं. I was banned from applying. I was under pack that before you apply you have to seek permission. But this form of collective punishment is only in the state of J&K. हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो बाजू के पंजाब में रूल है वही हमको भी करें. आर वी नॉट इक्वल सिटीजन्स ऑफ इंडिया? आपके कंसर्न जो है सर देखिए मैं आपके कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ. देखिए लोन साहब आपके कंसर्न को मैं अप्रिशिएट करता हूँ. अब सुन लीजिए. हम भी गए. वी हैव गॉन टू द कोर्ट. सर वहां स्पीकर साहब वहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं. पहले आप उनको बताइए. आप तशरीफ. अच्छा Sir, we have gone to the court. There is not a single piece of legal evidence on the basis of which they can deny police verification because he is related to someone. It's all word of the mouth, and unfortunately it has started probably in 1996 जब आप लोग थे. खैर कोई बात नहीं, we will not go into that. We need to discontinue it now. And we can put it there that is our intention, that our children should not be punished for something that their father has done or their brother has done or their cousin has done. It is primitive. How can we allow it? And how can this assembly keep quiet? Just tell me. हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किसी जगह सिलेक्ट होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और आप बोलते नहीं आपके चाचे का, बेटे का, ताए का कोई जो है वो के भी गया. उसमें तो नहीं आया जजमेंट सर. दैट्स अ सिंगल केस जो वो नहीं आया जजमेंट सर. आपको नहीं सुनना है. आई वॉक आउट बिकॉज यू आर नॉट. इट विल अप्लाई टू अदर केस ऑल्सो. अब हो गए ये क्लोज. इट इज क्लोज हो गया. मैंने रूलिंग दे दी.